हाय गाइस, वेलकम टू ओएस हब। तो आज जो आम सेसन नवा जोटा कि GS-4 पार्ट रे GS-4 आम गोटे सेसन ऑलरेडी नहीं सारी पुणी आम रिपीट करूँ सेकेंड सेसन यार। तो GS-4 रे आम देखू कि आज किसी केस स्टडी देखू, गोटे केस स्टडी देखू आउ रिलेटेड क्वेश्चन देखा। स्टार्ट करवा GS पेपर 4 एथिक्स रो पार्ट। ए पार्टा स्टार्ट करवा आज माने जो रोटेशन अनुसार मुझे एव्री बेसिकली डे रे नुआ नुआ पेपर GS पेपर से सबू पेपर तुम गोटे मौका मिल कि रिवाइज करने को एवं ये करने नेक्स्ट 25 डेज मु लास्ट संडे नहीं नी जदि पॉसिबल हम संडे टी समय होनी जदि पॉसिबल हम संडे भी नहीं जी पूरा जल्दी तुम सरीज माने 10 तारीख 12 तारीख भितर तुम सरीज सो दैट एगुड़ा आउ थे रिवाइज कर पाखापाखि 120-25टा क्वेश्चन तुम क्वेश्चन करदेवी एवं प्राय सबू एरिया को टच कर जोटा कि पूरा GS रो 4टा पेपर मेजोरीटी एरिया को ये क्वेश्चन सब टच कर तुम फायदा आसो इवेन इवेन नॉर्मल पढ़ारे भी तुमको ये काम आसो जिते भी जी पढ़ुच भी ये यूटिलाइज कर काम आसो। सो एनालाइज द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एथिकल डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक लाइफ। Analyze the factors that determine the ethical decision making in public life. Support your answer with suitable example. Support your answer with suitable examples. So analyze the factors that determine ethical decision making in public life. Support your answer with suitable example. Visual questions. So ethical decision making in public life is influenced by various factors that shape the choice of individual, leaders, and institutions. So public officials, policymaker, organization must consider these factors to ensure their decisions promote fairness, accountability, and common good. Below are the key factors that determine ethical decision making in public life. Key factor that determine ethical basically decision making in public life. देखिए one by one key factor. So कौन है ना ethical decision making कौन सेव करे individuals choice of individuals, factors that shape the choice of individual leaders and institutions. Public officials या पॉलिसी मेकर और ऑर्गेनाइजेशन ये फैक्टर को डिसीजन मेकिंग समय चाहे फेयरनेस हो चाहे अकाउंटेबिलिटी हो या कॉमन गुड पे ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग हेल्प करे। तो कौन कौन जोटा कि पब्लिक लाइफ डिटरमाइन करे की फैक्टर कौन डिटरमाइन गोटे पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल। पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल। An individual personal ethics shaped by upbringing, education, and cultural background play a significant role in that their decision making. Public officials with strong moral principles such as honesty, integrity are more likely to make ethical choices. Very important point. Public officials strong moral principle कौन honesty and integrity ये माने मोर एथिकल चॉइसेस नहीं परिवे
एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिशियल हो वैल्यू ऑनेस्टी विल रेजिस्ट एक्सेप्टिंग ब्राइब ब्राइब ये ऑनेस्टी को वैल्यू करे से ब्राइब को रेजिस्ट करे इवन व्हेन फेस्ड विथ फाइनेंशियल प्रेशर ओके तो तुम्हें भाई ड्राई ऑनेस्ट तो पिला बेलू किसी माने खाइन कुआड़े मोर ऑनेस्टी को लेकिन बहुत बड़ माइंड सेट अच्छी भाई मरीजी पर बरम करप्शन करी लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क laws and regulations set the foundation for ethical conduct in public life तो ethical decision making ये align हुए with legal obligation and ensure fairness justice and accountability very important ये टर्म गुड़ा तुम्हें यदि भल से लिखिदेल ना टर्म गुड़ा यदि भल से लिखिदेल ସେଇଟା କାମରେ ଆସିଯିବ तो ensure कौन करिवो justice fairness accountability the institution also establish code of conduct and ethical guidelines for public servant code of conduct and ethical guidelines for public servant for example anti corruption law and transparency regulation in many countries prevent public officials from misusing public funds clear so first है कौन ना पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल सेकेंड है सो आम कौन पढ़ुचे एक्चुअली एथिकल डिसीजन मेकिंग ऊपर पढ़ुचे analyze the factor that determine the ethical decision making in public life and support your answer with suitable example so आम दौचे सब गुड़े सुइटेबल एग्जांपल देकी ताको ये कर सो एथिकल डिसीजन मेकिंग बेसिकली कौन so awareness of ethical issue identify all the stakeholder identify all the stakeholder and research the facts apply moral principle and values then decide and act आगे तुम्हें जानिया दरकार कि अवेयरनेस होगा दरकार कि एथिकल इशू अवेयरनेस ऑफ द एथिकल इशू आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करो जिते तुम्हें डिसीजन मेकिंग नब एवं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी लाइक दिस तुम्हें आगे एथिक्स कौन या ऑनेस्टी ये जो एथिकल इश्यूज है ता विषय तुम्हें जानिया जरूरी identify all stakeholders research the facts apply moral principle and values and decide and act फाइनल है तापर जाकि डिसाइड करियो मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू को ये करिया पे करे देन कौन रहिबो सो आमे फर्स्ट पॉइंट देखले कौन ना पर्सनल वैल्यू एंड मोरल प्रिंसिपल सेकंड पॉइंट देखले लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क थर्ड पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी व्हेन पब्लिक डिसीजन आर मेड ओपनली यदि पब्लिक डिसीजन यदि ओपनली निया जीवो officials held accountable and ethical behavior is encouraged पब्लिक जहाँ भी डिसीजन करा जाए ऑफिशियल को ही अकाउंटेबल फिक्स करे एवं सही समय एथिकल बिहेवियर वेरी इंपोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी मेकानिज्म सच एज पब्लिक रिपोर्टिंग मीडिया स्क्रूटिनी हेल्प प्रिवेंट अनएथिकल प्रैक्टिस ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव where budget allocation and expenditure are made public reduce the chances of financial mismanagement reduce the chances of financial mismanagement ओके इरा तुम्हें एलोकेशन ऑफ बजेट रो केते एक्सपेंडिचर होची एलोकेशन होची देन पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉमन गुड ethical decision making in public life should prioritize the well-being of the society should prioritize the well-being of the society over personal and political gain okay so
पब्लिक इंटरेस्ट जदि डिसीजन मेकिंग एथिकल होइथिबो तुमे प्रायोरिटाइज करियो भाई सोसाइटी रो वेलबिंग रेदर देन पर्सनल पॉलिटिकल गेन the decision that benefit the majority while protecting the rights of the minority reflecting strong ethical governance benefit ro majority ro government majority people ପାଇଁ decision nabo but at the same time you should protect the minorities you should protect the right of the minority example is policy maker deciding to invest public health care the policy maker deciding to invest in public health care rather than funding luxury government offices shows a commitment to the common good policy maker जो public health care खर्च करिवो education रे खर्च करिवो ता छाड़ी कि से निजर एन्जॉयमेंट ପାଇଁ या निजर ऑफिस बनैबो निजर गाड़ी अब बंगला ये सब रे खर्च करिवो तो सेइथरे देखौची कि कमिटमेंट कोन तांकर देन सो आमे कोन देखिलु एक्चुअली आमे देखिलु कि पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल प्रिंसिपल आमे देखिलु लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टर्म गुडा टिके मन रखिया पई तुमको डिफिकल्ट होथुवा बट टर्म गुडा टिके मन रख सेइटा ही तुमको भलो मार्क दबो accountability and transparency public interest and common good and last दीटा है कौन ना political and social pressure political and social pressure तो देखिए पब्लिक ऑफिशियल often face pressure from political party ये तो समझते जानी चो चाकरी करियो माने वॉइस ऑफिसर हो माने political pressure रहिबो interest groups or the public while ethical leaders uphold moral standard despite such pressure ये प्रेशर हेले भी ये एथिकल लीडर थिवो ये तार मोरल स्टैंडर्ड को बरकरार रखी रख some may make decision based on political gain rather than ethical consideration जदि गोटे politician or refuse to engage in vote buying despite pressure from the party member demonstrate ethical leadership जड़े पॉलिटिशियन तुमको गोटे टिकट मिलला तुम एमएलए पाई लड़ईच एमएलए पाई छिड़ाईच तुमको कौन करागला ना तुम्हें कहला भाई जहाँ भी हो पार्टी कौच भाई पैसा देकी भोट किए तो भाई ना मोर लोके जब जी भोट देवे लोके जमी इलेक्ट करेंगे से मो दरकार मोटा अधिका दरकार नहीं देन कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स द कल्चरल वैल्यूज एंड रिलीजियस टीचिंग्स इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजन however ethical governance require balancing these values with inclusivity and respect for diverse perspectives a leader ensuring freedom of religion while maintaining secular government reflect ethical decision making that respect all citizens. Leader ensure freedom of religion. Leader ensuring freedom of religion while maintaining a secular government ethical decision so these are and last hala now organization culture and leadership ethical standard within a organization or government institution impact decision making and ethical leadership promote culture of integrity accountability encouraging others to follow suit so ethical standard गोटे जदि ऑर्गेनाइजेशन भितर रहिबो तार कल्चर एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट पड़ो एंड एथिकल लीडरशिप प्रमोट करे कौन ना कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड एनकरेजिंग अदर्स टू फॉलो आगे तुम्हें मानकर गोटे काम है एथिक्स किसी टर्म्स अच्छी हाँ कौन कहूल जगे सिनी किसी टर्म अच्छी चाहे अकाउंटेबिलिटी हो इंटीग्रिटी हो ये सब गोटे टर्म गुड़ा तुम टे भलसे मीनिंग बुझी जाओ
ଦେଲେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେसेସ୍। For a public institution led by ethical director will have policies that discourage nepotism and favoritism in hiring practices. So challenges कौन? Not conflict of interest. Obviously ethical तुम्हें जेते हो, the situation of personal interest might influence the decision. And every decision making रे in government रे क्या आसीबो? पर्सनल माने कौन मुझे कही दूची जिते तुम्हें सर्विस रे जीव तुम ऑलरेडी बहुत सारा तुम ऊपर बहुत थे सर्विस सिविल सर्वेंट बहुत थे तो से माने मन रे ये तो सब थी कि ये आसी छोट पिला तुम्हें जहाँ भी तुम माइंडसेट नहीं जाइए तुम्हें हिसाब से कम करने चाहिए कम कर एंड दे ट्राई टू मेक यू डाउन एंड मेक यू अंडर देयर ओबीडिएंट चाइल्ड तो हाँ तुमको से भाया करने को ट्राए करेंगे जी तुम्हें बेसी किसी देखल तो सी कौन करेंगे तुम्हें यही समय डिसीजन आसो यही समय तुमको डिसीजन नाक आसो कि से कहते करप्शन करने से कहते एमती चले तुम पर्सनाल कौन ना मोर ये इंपैक्ट कर कौन तुम्हें कौन ट्रांसफर करदे या कौन तुम काम देवेनि या तुम्हें गोटे हारास हो तो सही सिचुएसन तुमको डिसीजन नाक पड़ो कि भाई मोर निजर पर्सनाल देखी बेनिफिट ना मु काम ये करने को आसी कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सब पॉइंट ऑफ टाइम आसो एवरी फ्रॉम डे वन एंड पॉलिटिकल प्रेशर बैलेंसिंग पब्लिक नीड्स विथ पॉलिटिकल कंसिडरेशन ये भी माने डे टू डे फंक्शन lack of clarity in ethical guidelines ambiguous situation where right choice is not obvious बहुत सारे सिचुएशन आसे ambiguous situation से कंडीशन रे क्लारिटी न थाए तो कंक्लूजन देखिए सो एथिकल डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक लाइफ इज शेप्ड बाय पर्सनल इंटीग्रिटी लीगल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंसी पब्लिक इंटरेस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस cultural values institutional ethics. The leaders and public officials who consider these factors contribute to just, accountable and progressive society. So ethical governance ensure the fair distribution of resources and promote public trust, leading to long-term societal development. Leading to long-term societal development. Clear hello? ठीक भोकाबुलारी टिके स्ट्रॉन्ग कर भोकाबुलारी स्ट्रॉन्ग माने जो जो वर्ड कहूँ मु इंटीग्रिटी है पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसपेरेंसी वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज इंस्टीट्यूशनल एथिक्स देन अकाउंटेबिलिटी तो कहली अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये सब पब्लिक इंटरेस्ट ये सब देखिकी रख ये सब टर्म गुड़ा तुम बहुत ही कम आसो पाखापाखि गोटे लिस्ट कर दियो एथिक्स मुझे जितेटा भी क्लास नौ से तुम बहुत सारा पाइज गोटे लिस्ट कर दियो कि पाखापाखि 50टा 60टा खंडे वर्ड तुम्हें यूज कर पर्टिकुलाली से वर्ड 50 रु 100टा खंडे वर्ड अच्छी जोटा कि यूज कर अलग जगह यूज कर बट ये भलसे कर देन डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल in addressing the contemporary ethical dilemma. Okay, Gandhian principle, present dilemma. Mahatma Gandhi became renowned Mahatma, janicho, for his fearless, selfish, unselfish, and peaceful philosophy, as well as his attempt to bring socio-political change. He is revered as a saint, statesman, revolutionary, author, social reformer, and many more. तो गांधीयन प्रिंसिपल जदि कि रेलिवेंस देखिए टुडे नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस सत्याग्रह ये एबे भी रेजिस्टेंस एबे भी तार रेलिवेंट दी इन ए वर्ल्ड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रॉड एंड कॉन्फ्लिक्ट
Gandhi's method of non-violent protest offer a powerful alternative to the violent solution. ना नहीं violent solution ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ alternative and enabling individual to fight for their right without resorting to aggression. As seen in the movement of civil rights struggle in US also. Sorry. तो गोटे नॉन वायलेंस सत्याग्रह मेथड या रेजिस्टेंस ताकू भी वायलेंट सॉल्यूशन हला एवं यार एग्जांपल तुम देदेव सिविल राइट मूवमेंट इन यूएस रे से आइतला नॉन वायलेंट वे रे मूवमेंट हेतु देन ट्रूथफुलनेस सत्य Gandhi's emphasis on honesty and transparency is critical in today's environment where misinformation and corruption are prevalent. यदि तुम ट्रूथफुलनेस रही तुम करप्शन करबनी एंड प्रमोटिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल फेयर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी गांधीज कमिटमेंट इन फाइटिंग राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जोटा कि हरिजन ना देते सी अनटचेबल बहुत काम करते एंड एडवोकेटिंग फॉर सोशल इक्वालिटी रिमेन्स ए क्रूशियल in addressing issues like caste discrimination, gender inequality, economic disparity. Self-reliance, yes, Suraj. Gandhi's belief in individual empowerment and taking the responsibility of one's action encourage people to actively participate in creating positive change within their community. Okay, individual empowerment then compassion and service, seva. The concept of selfless service to others is vital in addressing humanitarian crisis and fostering sense of community responsibility. ये भी गोटे बहुत बड़ा तुम इम्पैक्ट गांधी जी सो कौन कौन देखिले नॉन वायलेंट कौन कौन देखिले आमे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ट्रूथफुलनेस सोशल जस्टिस एंड ये पॉइंट गुड़ा सब लिखी दी था सेल्फ रिलायंस एंड कंपेशन एंड सर्विस या सेवा ओके आउ कौन हो पारे जदि आम एग्जांपल दवा इवन टुडे एज गवर्नमेंट वर्क्स टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट Gandhi's concept of Swadeshi is still widely held. The second iteration of Swadeshi was introduced by Prime Minister Narendra Modi during the COVID time when India is going through a terrible economic crisis under the name of Atmanirbhar Bharat. Self-reliance. Gandhi consistently worked to promote intercommunal unity that is urgently needed, and 73rd 74th amendment which gave local self-government more power help India execute Gandhian principle of decentralization. So यार example दे परियो then Gandhi was a strong supporter of Swachhata and paid close attention to cleanliness. His vision of clean India has been realized by the recently launched Swachh Bharat Abhiyan. And Gandhi constantly advocated minimizing demand. Since human greed is destroying environment, and sustainable lifestyle is necessary in our day and age. According to him, there is enough on the earth. It is very important. There is enough on the earth for human needs, but not enough for the human greed. So global warming, climate change and resource depletion are the three main issues faced by the world today. And Gandhi thought must be incorporated into all environmental agreements and sustainable. It's very, very important, guys. It's very, very important. Question star. Discuss the relevance of Gandhian principle in addressing the contemporary ethical dilemma.
इंट्रोडक्शन टा हला ये गांधी जी के विषय टी लिखिबो। ओके, तो आम देखिल की एस्पेक्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल रेलिवेंट टुडे जोंटा कि नॉन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ट्रुथफुलनेस, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सेल्फ रिलायंस, कंपैशन एंड सर्विस। तार एग्जांपल देखिले कि आत्मनिर्भर भारत हो, 73rd 74th अमेंडमेंट हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ये गांधीयन प्रिंसिपल अंडर रे अछंती। जोंटा कि विलेज कथा कहिथिले एवं जोंटा कि ग्रीड को डिस्ट्रॉय करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये सब जोंटे कि देयर इज एनफ ऑन द अर्थ फॉर ह्यूमन नीड्स बट नॉट एनफ फॉर द ह्यूमन ग्रीड, ये सब। सो द वाउज ऑफ द गांधीज: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, परिश्रम दैट इज वर्किंग फॉर द डेली फूड, असोड़ा, कंट्रोल द डाइट, सर्वत्र सर्वत्र व्यवहार्य दैट इज फियरलेसनेस, व्यवहार्जना, सर्वधर्म समत्व that is equality for all religion, and Swadeshi use local made good, and against idea of untouchability, स्पर्श भावना and अहिंसा, ये सब जानिछ। they are all Gandhian vows। So application of Gandhian principle contemporary dilemma गोटे environmental activism। Gandhian principle can be applied to environmental issues by encouraging sustainable practices, non-violent protest against harmful project, and promoting awareness about ecological concern. Then corporate ethics. The companies can incorporate Gandhian values like honesty, transparency, and accountability to navigate ethical dilemma in business practices. Political conflict. Gandhian method can be utilized to promote dialogue, peaceful resolution in situation of political tension and unrest. Then social movement. Activists can leverage non-violent resistance tactics to advocate a social change in issues like human rights, LGBTQ rights, and labor rights. So these are contemporary dilemma को environmental activism रे, corporate ethics रे, political conflict, peaceful resolution करिवा, social movement जोंटे कि non violent way रे करिवा। तो जदि कि Gandhian ethics provide timeless solution to the contemporary dilemma by advocating truth, peace, sustainability, simplicity, and social justice. Integrating these values into modern governance, business, and daily life can lead to the more ethical and equitable world. Okay, can lead to more ethical and equitable world. So this discuss the public service code as recommended by Second Administrative Reform Commission. Public service code. Second ARC. Second ARC समझ जानी चो? August 31 2005 रे ये रिफॉर्म कमिशन ताकर ये देइथिले। So public service code as recommended by second ARC was aimed at reforming public service in India to enhance efficiency, transparency, and accountability. Here are the key aspects and recommendation put forth by ARC regarding the public service code. देखिवा। So consolidation and simplification. First देखिवा consolidation and simplification. The code aimed at consolidate and simplify the existing plethora of rules, regulation, and procedure. ये बेसिकली दीज आर फैक्चुअल, एटा फैक्चुअल पार्टा तुमे ताकू मने रखी देथिबो।
तो कोड कौन ना consolidate and simplify the existing plethora of rules, regulation and procedure governing public service in India. This should make the system more coherent and easier to navigate for both public servant and citizen. More coherent and easier to navigate. यदि consolidation करे बहुत सारा rules अच्छी जो redundant अच्छी overlap अच्छी. Similarly, uniformity and standardization. Uniformity and standardization. It establishes uniform and standardization in recruitment, career progression, service condition across different public service and department. तो ये आउ कौन रेकमेंड कला कि यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजेशन हवा दरकार रिक्रुटमेंट हो कैरियर प्रोग्रेशन हो या सर्विस कंडीशन रे इस तीन जगह ये प्रोसेस हवा जरूरी देन मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेंट एम्फासिस मेरिट बेस्ड रिक्रुटमेंट एंश्योरिंग दैट the appointment to the service are made based on qualification, skill, and contemporary competency rather than extraneous consideration. And transparency and accountability. Enhance transparency in functioning of public service by clearly define their role, responsibility कौन, performance expectation कौन अच्छी. तांको define करिया दरकार कि तुमे कौन काम करिवो कौन काम करिवो नहीं. So first accountability through mechanism of for performance evaluation हवा भी दरकार एबे भी होउची and grievances redressal ये भी civil service रे रहिबा दरकार. Then ethical standard incorporate ethical standards and codes of conduct to guide the behavior and conduct the public servant, promoting integrity and ethical governance. तो incorporate कौन करिवो ethical standard codes of conduct to guide the behavior and conduct a public servant, promoting integrity and ethical governance. So key recommendation आउ देखिबा. So these are basically objective of public service code. तार काम होला कौन ना consolidation simplify करिबा, uniformity of standardization and standardization merit based recruitment हबो and transparency and accountability maintain हबो and ethical standard रहिबो. Recommendation होला कौन ना unified framework for recruitment and service condition. Unified हवा दरकार जोने कि आमे देखिथिले तार गोल ऑब्जेक्टिव रे. So here she recommend establish a uniform framework for recruitment, service condition, promotion, transfer and disciplinary proceeding across all central and state public service. Performance management. Performance management. तो फर्स्ट है यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर रिक्रूटमेंट सर्विस कमीशन चाहे ट्रांसफर हो प्रमोशन हो रिक्रूटमेंट हो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो ऑल सेंट्रल एंड स्टेट सर्विस रो गोटिए प्रोसीजर रहइबो यूनिफाइड रहइबो राइट. देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस robust performance management system रहइबा दरकार टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑब्जेक्टिवली एंड फेयरली. ओके. So this should indulge regular assessment, feedback mechanism and opportunities for career development. इरा परफॉर्मेंस भी मैनेजमेंट ये बहुत ही बड़ फैक्टर ता थ्रो रे से तुमरो असेसमेंट करियो ताको. And ethics and integrity incorporate provision for promoting ethics and integrity in public service through clear code of conduct, training programs, mechanism for reporting misconduct or corruption. Streamlining rules and regulation. Simplify and rationalize the existing rules, regulation and procedure governing public service to eliminate redundancy and bureaucratic hurdles. Streamline करियो सब rules regulation, simplify करियो जो rules regulation अच्छी
ताकू प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिया दरकार गोटे रूल रहा दरकार गोटे जगह ना हजार रूल हजार जगह रही प्रोब्लेम हो तो स्ट्रीमलाइन करिवो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को जोटा कि इनकॉर्पोरेट करिवो मिसकंडक्ट करप्शन को देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिफाइड फ्रेमवर्क रिक्रूटमेंट देन सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगा दरकार एम्फासिस ए सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इन सर्विस डिलीवरी ensuring responsiveness efficiency and accountability toward the public तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच एटा हवा दरकार देन तुमर लास्ट जो देखा कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी एटा हला कहार रिकमेंडेशन दीज आर सेकंड एआरसी रो रिकमेंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन capacity building strengthening capacity building initiative for public servant to enhance their skill knowledge capabilities in line with the evolving needs of governance and public service पब्लिक सर्वेंट जो नुआ समय अनुसार भी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हवा जरूरी तो सही जिनस कहुच्छे So implementation challenge despite the potential benefit implementing the public service could face several challenges. Kudala kono political will. Reform often require strong political will and consensus among the various stakeholders which challenges to achieve resistance to change. Bureaucracy ete shigra change hobani. Resource constraint adequate resource nai including financial resource infrastructure human capital are essential for implementing it. And coordination among the states so achieving uniformity and standardized across that state ये दरकार कि स्टेट रो एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर एंड कैपेसिटी ये गोटे चैलेंज दूसरी देन पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन यार सक्सेस हमारा सबुठ बड़ इंपोर्टेंट है पब्लिक अवेयरनेस एंड कंक्लूजन देखे इन कंक्लूजन while public service could recommended second ARC aimed modernize and streamlining the public service in India successful implementation require addressing these challenges through strategic planning stakeholder engagement and institutional reform okay ये तो मैंने कंक्लूजन then fourth question है what do you understand by the terms governance good governance and ethical governance तीनटा मेजर टर्म यार माने कौन बुझुछ इंट्रोडक्शन देखिए so governance refer to a framework processes system by which an organization or society is managed and directed it encompasses the mechanism through which authority is exercised decisions are made and stakeholder interests are balanced so governance कौन गोटे फ्रेमवर्क गोटे प्रोसेस गोटे सिस्टम जहाँ थ्रो रे सोसाइटी हो या गोटे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करा जाए ताको डायरेक्ट करा जाए सेई थ्रे कौन ना थ्रो अथॉरिटी ये एक्सरसाइज करिवो जे डिसीजन नबो एवं स्टेक होल्डर रहिबे जोटे कि ताको बैलेंस करिवो तो गवर्नेंस इनक्लूड कौन ना स्ट्रक्चर दैट सच एज बोर्ड हो काउंसिल हो कमिटी हो पॉलिसी स्ट्रक्चर रहिबो पॉलिसी रहिबो प्रैक्टिसेस दैट एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी आम ये केतेटा क्वेश्चन केते थर देखिले माने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी केते थर देखिलुनी तो गुड गवर्नेंस कौन आमको आम कौन कौन देखी आम गवर्नेंस गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस गुड गवर्नेंस कौन ना कैरेक्टर बाय इफेक्टिव एंड इक्विटेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड रिसोर्स इट इनवॉल्व आम गुड गवर्नेंस जो पढ़ी से देखी गुड गवर्नेंस कौन कौन गोटे पार्टिसिपेशन रहा दरकार गुड गवर्नेंस ये है प्रिंसिपल तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे पब्लिक पार्टिसिपेशन रहिबा जरूरी okay similarly rule of law ensuring that legal framework are fair enforce impartially and protect the human right transparency responsiveness conscious oriented consensus based basically equity and inclusiveness and effectiveness and efficiency and accountability
ये ये आमर जिते आम गुड गवर्नेंस जो पढ़ी तार ये है प्रिंसिपल गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल है पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ को फॉलो करवा ट्रांसपेरेंटी मेंटेन करवा रेस्पॉन्सिबिलिटी माने कौन स्टेक होल्डर जोटा कि जहाँ जार प्रॉब्लम कौन है ठीक से डील करवा कंसेंसस बेस्ड बेसिकली डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप सहित एग्रीमेंट होगी किसी गोटे डिसीजन नवा इक्विटेबल एंड इनक्लूसिव समस्त को जमी ऑल मेंबर द सोसाइटी को इनक्लूड करवा एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेस को भल से यूज करवा और अकाउंटेबिलिटी माने डिसीजन मेकिंग जोटे कि रेस्पॉन्सिबल होगा दरकार तो एथिकल गवर्नेंस कौन ना रेफर टू एप्लिकेशन एथिकल प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग so it emphasizes the importance of integrity honesty fairness and respect for all stakeholders ethical governance ensure that action and policies are not only legal but also moral and socially not only legal but also moral sound and ethically responsible okay so ये ला governance good governance and ethical governance so key aspect include integrity upholding honesty and ethical governance honesty and strong moral principle in all action and decision fairness treating all stakeholder equitable and without bias accountability responsible हवा दरकार once action and decision transparency open manner हवा दरकार जोटे कि stakeholder को accurate information देव respect the stakeholder valuing and consider the interest and rights and dignity of all stakeholder and social responsibility acting in a way that benefits society at large beyond mere compliance with laws and regulations तो ये सब तुम एथिकल गवर्नेंस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज गुड गवर्नेंस एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन लॉस एंड रूल तो ये बेसिक डिफरेंस में देख लास्ट है गोटे केस स्टडी अच्छी मुझे दूसरी तुम देख एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट उपर गोटे केस स्टडी अच्छी तो देखियो कौन ना इंडस्ट्रियल केमिकल आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए बिग स्केल by a conglomerate suggested establishing second unit due to its negative impact on the environment. Many states तो ये second unit करिया जाउची. Many states कौन ना reject this proposal. But one state government acceded to the request and permitted the unit close permit kala. So brushing aside all opposition, further the unit was set up 10 years ago and was in full swing till recently. The pollution caused by the industrial effluents was affecting the land, water and crop in the area. So it was also causing serious health problems. It was also causing serious health problem. Serious health problem. It was also causing serious health problems to human being and animals. This gave rise to a series of agitation demanding the closure of plant. In recent agitation, thousands of people took part, creating law and order problem necessitating stern police action. Okay, so law and order problem create कर ले बहुत सारा people. So following the public outcry, the state government ordered the closure of factory, and the closure of factory resulted in unemployment not only to those workers who are engaged in the factory, but also those who are working in the ancillary unit, and also very badly affected those industry which depend on the chemical manufactured by the it. ये पूरा ओवरऑल तार माने सराउंडिंग रे भी कंपनी गुड़ा क्वेश्चन एज एन सीनियर ऑफिसर entrusted with the responsibility of handling this issue how are you going to address it कौन now what are the ethical issues involved and the options available to you in such situation also suggest the course of action you would like to follow बुझेला स्टोरी बुझिलो स्टोरी है कौन ना बेसिकली प्लांट है प्लांट को केमिति डील करिवो ओके पॉल्यूशन क्रिएट करुछ देख पूर्व कथा भूली जाओ सी गोटे स्टोरी बनाई कि आगु गोटे प्लांट थिला समस्ते जानी से पॉल्यूशन होउची तापर भी सी सेकेंड प्रपोज कला कौन सी स्टेट एग्री हो नथिला गोटे स्टेट एग्री हला
एवं सी स्टेट रो लोके भी चाहू नथिले स्टिल देन सी गवर्नमेंट आडामेंट हैला तो प्लांट हबार परमिशन दबार 10 वर्ष परे एबे एते पोल्यूशन होची सेटी लैंड वाटर एंड तुमर रिलेटेड एरिया एयर पोल्यूशन भी होची तो ये प्रॉब्लम जुगु लोके प्रोटेस्ट कले और लोके प्रोटेस्ट कला जो सरकार से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट 10 वर्ष पर जो है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सी क्लोजर कले बंद करदेला बंद कला जो कौन है ना सी तो कंपनी बंद है तार एम्प्लॉयमेंट गला गला ता ऊपर जो डिपेंड थिले अलग एम्प्लॉय माने तांकर भी पड़ेगला जॉब तो यही सिचुएशन रे वेल एटर दो इंडस्ट्री जी की डिपेंड करते तो सही केस रे कौन करिवो गोटे है कौन हाँ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यस So the case involved the conflict between public health, environment safety versus livelihood of the people. So it requires proper balance between environmental ethics and developmental ethics. Stakeholder key achanti, me as a senior officer, big responsible to solve the case. People living in the area, employee of the closed factory, ancillary unit ta pakapaki ja achi, state government, ji permission deji set up the industry pore, and ML and MP of the area. ये सब स्टेक होल्डर एथिकल कौन ethical issue called emotional intelligence. It would help the senior officer to handling the difficult situation arising from the above cases. Jadi emotional intelligence. Then empathy. It is an awareness of the needs of feeling of others, both individually and in the group, and being able to see things from the point of view of others. An ethical dilemma kon involve achi. Environmental responsibility versus development. There is a conflict between development and saving nature from degraded due to setting up of industrial unit. तो conflict अच्छी कौन development हवा और nature को save करियो. So you are the managing director of Metro Rail Corporation, and you receive a order and functioning of the construction of metro track and parking space in closely densely forested area. तो ये क्वेश्चन टा अलग अच्छी ये अलग अच्छी. तो बेसिकली कौन कौन इश्यूज इनवॉल्व अच्छी एथिकल इश्यूज या ऊपर गोटे इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पाथी आ गोटे एथिकल डिलेमा है कौन ना एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस डेवलपमेंट ये तीन टा जिनसर इनवॉल्वमेंट अच्छी. तो यार तुमर ये सिचुएशन रे मोर एथिकल इश्यू कौन कौन इनवॉल्व अच्छी जोटा कि आम देखिले इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पाथी एंड एथिकल डिलेमा ये इनवॉल्व अच्छी सच सिचुएशन रे आउ ऑप्शन कौन कौन अच्छी तुम्हें कौन कौन करी परिवो जोटा कि कोर्स ऑफ एक्शन. ओके तो यहाँ ट्राई करो ट्राई करिकी लेख देखिए नेक्स्ट क्लास तुमको देखी. ओके so thank you guys, thank you for watching, god bless you all.